This is the second video on backpropagation, and this corresponds to the handout, the second handout that has been uploaded on LMS. So उसकी basics के बारे में I'll just let you know. So I'll just take the same example which is taken in the handouts. So let's consider a very simple network, and we have, let's say, a network that has got an input. So you have got an input X, and then we have got another node, let's call it G1, then another node, let's call it G2, and then we have got our final output, which is Y hat. Our desired output is Y, and we can apply any loss function here, which would primarily be the difference between these two values. तो लॉस फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, विच इज़ लेट्स से हाफ ऑफ वाई हैट माइनस वाई होल स्क्वायर. क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन जो है ना, वी कैन एक्चुअली कंसिडर देम, एंड द वेट्स आर लेट्स से W1 between the inputs and the first node, and W2 between the first node and the second node, which is primarily your output node in this particular case. The activation functions can be considered as ReLU activation functions, जैसे हमने किया है. Details are in the handout, but here I'll simply let you know that how the derivation or how the derivative or the chain rule is actually applied in this particular case. So with respect to the loss function L, if you want to calculate the change in weights, let's say W2, that would be partial derivative of the loss function with respect to the weight function, which is with respect to the weight, which is W2 in this particular case. And because there is only one input that is coming in from one node to another node, therefore वो summation वाला part जो है ना, that would primarily is dropped out in this particular case. अच्छा, तो how do you actually find out this derivative? This derivative is calculated through back propagation. So the पहली चीज़ जो आपने करनी है, loss function का derivative with respect to y hat, which is your output of the network. So L with respect to y hat, and then you take the partial derivative of y hat with respect to the input with respect to the input that is actually coming into the node, which is G2. Let's call this as Z2, or Z2 is primarily जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रही है. Z2 is primarily the aggregation of all the inputs. यहाँ पे क्योंकि एक input आ रही है, which is represented by this arrow, so Z2 would primarily be the output of this neuron, which is G1, output of the neuron G1 times W2. तो ये Z2 की वैल्यू हमारे पास आती है, and that then multiplies with the partial derivative of Z2 with respect to the weight, which is W2. तो ये हमारे पास primarily equation जो है वो बन जाती है. And in this equation, Z2 is simply the output of the neuron G1, and you can call it, let's say, H1. यहाँ पे इसकी जो output आ रही है वो मेरे पास H1 है, let's assume इसकी जो output है, तो that would be H1 times W2. ये है मेरे पास जो है ना, that is primarily your Z2, and this is what is you call as the chain rule. तो इस तरह से using the chain rule you can actually calculate the values for the partial derivatives of let's say of the weights with respect to weights. और अब अगर W1 आपने कैलकुलेट करना है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो we'll assume कि the input that is going in to G1 is, let's say, Z1,
Z1 is primarily, in this particular case, Z1 is X times W1, X times W1. Yeah, क्योंकि एक ही इनपुट है हमारे पास, तो therefore there won't be any aggregation because there is only single input that is coming on. Otherwise यहाँ पे summation का sign आएगा. Okay, so the partial derivatives that you can simply calculate in this particular case would be that if you want to calculate the partial derivative of L with respect to W1, इसकी जो expression होगी, so you simply come to this node. So यहाँ पे it would primarily be let's say the partial derivatives जो हमारे पास आते हैं, let me consider that to be this, for example, done. तो इस केस में it would be partial derivative of the loss function with respect to y hat, then partial derivative of y hat with respect to z2, then a partial derivative of z2 with z1 with respect to the input that is going into the network. So partial derivative of this, and then this partial derivative with respect to w1 will be our primarily the thing. So इस केस के अंदर this would primarily mean that you will have the partial derivative of L with respect to y hat, that is your first thing. Then it would be the partial derivative of z2 with respect to, let's say, a let's we can call it h1, which is like coming in. Then partial derivative of h1 with respect to z1, which is our input that is coming in, and then that would be partial derivative of z1 with respect to w1. So ये इसके partial derivatives हमारे पास आएंगे. There is probably one that is missing, and that is, हाँ, यहाँ पे एक आएगा partial derivative of y hat with respect to z2. तो ये 5 derivatives आएंगे इस केस के अंदर. So this, if you multiply all of these together, this is what you will actually be getting. ठीक है, partial derivative of the input that is actually coming up. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास जो h1 है, h1 is primarily the output of this particular neuron जो हमारे पास आ रही है. Then it gets multiplied with w2 and you get z2. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट आ रही है, वी कैन एक x आ रहा है, x को जब हम w1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट z1 एज आर इनपुट. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली calculate these partial derivatives. I hope this is clear. So this is not very difficult. So this is loss function with respect to our desired with respect to our network output. Then the network output with respect to the input to the consecutive node, and then primarily z2 with respect to h1, which is primarily output of the previous node. ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे this is again calculated, and this is again calculated, the partial derivatives, and then you simply multiply these partial derivatives, and that's what you will actually be getting. ठीक है, so let's just take another example in this particular case, and probably this would help us आइडेंटिफाई कि मल्टीलेट परसेप्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ जाती हैं.
ठीक है, तो लेट्स जस्ट टेक दिस as a standard input. So we have got an input which is x1. Let's call this first node. Then we have got the second input which is x2. Then we have got another neuron here and another neuron here. ठीक है, ये हम टू हिडन लेयर नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट वन आउटपुट विच इज़ इन दिस केस. सो ये हमारे पास वेट्स इस तरह से कुछ कनेक्टेड है. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दिस टू बी अ फुली कनेक्टेड नेटवर्क. ठीक है जी. एंड लेट्स से कि मैंने ये वेट कैलकुलेट करना है विच इज़ आई कॉल दिस एज W1 एंड आई कॉल दिस वेट एज W5 and this as W9. ठीक है, so the input that is coming in here, this would be the aggregation. Let's call this as Z1. This is the aggregation of all the inputs that are coming into this neuron. और ये क्या होगा, this would be x1 times W1 plus x2 times इसका जो अपना वेट है यहाँ पे, let's call this as W2. तो x2 टाइम्स W2, इन दोनों की एडिशन जो होगी वो Z1 के बराबर होगी. तो Z1 जो होगा दैट इज़ प्राइमरीली द एग्रीगेशन ऑफ योर वेट्स टाइम्स योर इनपुट. ठीक है, और इसके बाद हम इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं एंड द आउटपुट कम्स आउट टू बी A1. लेट्स कॉल दैट एज A1. ठीक है, तो ये मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन आएगा. द एक्टिवेशन फंक्शन कुड बी लेट्स से सिग्मॉइड, या आप रिलू ले सकते हैं, कोई और ले सकते हैं. देन कम्स अनदर न्यूरॉन हियर. लेट्स कॉल दिस एट Z3 and A3 as our output. This is Z2 and A2 and this is Z4 and A4. और यहाँ पे हमारे पास Z5 and A5 आता है. And then the output that we get is y hat. और लॉस फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ प्राइमरीली क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन. अगेन हेयर y hat minus y whole square. This is what you'll actually be getting. अच्छा, अब इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालते हैं. तो लेट्स जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो फर्स्ट करें मैंने ये वेट अपडेट करना है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा. वेरी सिंपल, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव. तो दिस इज़ द लॉस फंक्शन दैट यू आर गेटिंग हेयर. लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y hat और A5 जो है ना, दे आर एग्जैक्टली द सेम, A5 और y hat. सो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेटेड आउटपुट ऑफ दिस न्यूरॉन. फिर एक्टिवेटेड आउटपुट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z5. ठीक है, और फिर Z5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W9. दिस इज़ व्हाट यू विल एक्चुअली बी गेटिंग. तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आएगा, लेट्स से लॉस फंक्शन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू W9, इस वेट का हमने निकालना है. सो दैट वुड बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y hat A5 के बराबर है, times the loss function, the partial derivative of y hat with respect to the aggregation of inputs, and aggregation of inputs in this particular case is Z5. Z5 is the addition of this input and this input times the partial derivative of Z5 with respect to the weights, और ये W9 के रिस्पेक्ट आपने करना है, तो this would be partial derivative with respect to W9. So this is what you will actually be getting. ठीक है, अगर मुझे W1 का फॉर एग्ज़ाम्पल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन, तो उस केस में मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन आएंगे विद रिस्पेक्ट टू W1, तो दिस इज़ व्हाट दिस वुड बी एक्चुअली डूइंग. तो W1 के लिए मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो it would be firstly it would be the partial derivative of Z1 with respect to W1. और फिर इसमें दो रूट्स बनते हैं. There are two inputs that are coming into this particular node. One is coming in through this root, ठीक है, which is represented here,
and the other one is actually coming in through this root. तो ये दो मेरे पास रूट्स बनते हैं. सो अगर अपर रूट और इन दोनों की एडिशन जो होगी वो यहाँ पे हमारे पास होगी, एंड देन दैट एडिशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्शियल डेरिवेटिव. तो इस केस में लेट्स कॉल इट, लेट्स से द अपर रूट, लेट्स कॉल दिस एज, मैं उसका कलर ये चेंज कर देता हूँ, तो लेट मी रिप्रेजेंट इट विद दिस. तो ये एक रूट मेरे पास आएगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे. ठीक है, वील कैलकुलेट देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स विच इज़, लेट्स से मैं एल से शुरू करता हूँ. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, then partial derivative of y hat with respect to z5, z5 का partial derivative with respect to a a3, a3 का partial derivative with respect to z3, z3 का partial derivative with respect to a1. तो this is one path completed. और अब नीचे वाला पाथ जो है ना, दिस वुड बी एल विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, ये तो बिल्कुल वैसे ही आएगा. वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू z5, ये भी तकरीबन वैसे ही है. देन नाउ अपर रूट की बजाय वील एक्चुअली टेक द लोअर कनेक्शंस. सो दिस वुड बी partial derivative of z5 with respect to a4, a4 with respect to z4, z4 with respect to a1. तो दिस इज़ द सेकेंड टर्म. तो ये दोनों टर्म्स इस केस में ऐड होंगी, and both of these terms, when these terms will be added, then finally they'll be multiplied with this final term, which is the partial derivative of z1 with respect to w1. तो इस तरह से मैं इसका जो वेट है updation expression, I can calculate the updation expression, right? So this is how this can actually be calculated, right? So I hope this is clear. Okay, thank you. So I'll actually have a follow-up video on this, जिसमें किसी एग्जांपल के साथ we'll sigmoid activation function के साथ इसकी calculations भी करेंगे, and I'll just show you that probably in the next video. Thank you.